हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द मैट एरा। आज हम पढ़ रहे होंगे बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम कवर करेंगे द बेसिक्स ऑफ सेल्स, द डेफिनेशन, द टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, देयर मेजर डिफरेंसेस, द वेरियस सेल ऑर्गेनेलिज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर मार्कर एंजाइम्स, द मोस्ट common and famous, the fluid mosaic model, and last but not the least, the various transport across cell membrane. So let's start with our topic, the basics of cell. So what is cell? The cell, it is the structural and functional unit of life. It may be regarded as a basic unit of biological activity which perform all the functions. The cells of living kingdom may be divided into two categories, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. The prokaryotic cell being the more primitive one and the eukaryotic being more advanced than prokaryotic cell. So the major differences are the prokaryotic cell possesses a relatively simple structure, whereas on the other hand the eukaryotic cell possesses a complex structure. The prokaryotic cell lacks a well defined nucleus, means the nuclear membrane is absent, so the genetic material is scattered. There is no nuclear membrane in the prokaryotic cell. In this, nucleoid is present. Whereas in the case of eukaryotic cell, these possess a well developed nucleus with a double nuclear membrane and they have a perinuclear space between them. The prokaryotic cell present in the kingdom Monera, that is bacteria, and eukaryotic cell present from the kingdom Protista to the kingdom Animalia. Let's discuss some major differences between the prokaryotic and eukaryotic cell. So about the size, prokaryotic cell is small, these are large. Cell membrane, prokaryotic cell, these cells are enveloped by rigid cell wall, and eukaryotic cell enveloped by the flexible plasma membrane. Subcellular organelles or the cellular organelles, these are absent in the prokaryotic cell, and in eukaryotic cell distinct organelles are found, that is mitochondria, nucleus and lysosomes. The only cellular organelles that is found in the prokaryotic cell, that is ribosome, which is of 70S type, and in eukaryotic cell the ribosome is of both 70S as well as 80S. 70S ribosome is found in the mitochondria and 80S in the cytoplasm. What about nucleus? The nucleus in the prokaryotic cell, it is not well defined, that is DNA is found as a nucleoid, histones are absent. Whereas in the eukaryotic cell, the nucleus is well defined, surrounded by a membrane, the DNA associated with histone for packaging. Energy metabolism. So in the prokaryotic cell, mitochondria is absent. The enzymes of energy metabolism bound to membranes, and the energy production is from by the mesosomes, which are the plasma membrane invaginations. In the eukaryotic cell, the enzymes of energy metabolism are located in the mitochondria and energy production by the phosphorylation. Cell division. In the prokaryotic cell, usually fission and there is no mitosis. There is simply fission. Whereas in the eukaryotic cell, the mitosis and meiosis occurs. Cytoplasm. So prokaryotic cell, organelles and cytoskeleton absent. The only organelle that is found in the prokaryotic cell, that is ribosomes. Whereas in the eukaryotic cell contains organelles and cytoskeleton. So let's move to the topic, that is cell organelles. So first we discuss about the nucleus. It is the largest cell organelles which contains a double membrane, the outer nuclear membrane, the inner nuclear membrane, and the space present between outer and inner nuclear membrane, it is perinuclear space, PNS. Nucleus contains genetic material which is in the form of DNA. The nucleus contains nucleoid in the case of prokaryotic cell. DNA replication and transcription occurs in the nucleus, but the translation occurs in the cytoplasm by the help of ribosomes. Next we discuss about the mitochondria. So as we know, the mitochondria, it is the powerhouse of cell. The matrix of mitochondria, it responsible for the metabolism of carbohydrates, lipids and amino acid by various processes like electron transport chain, ATP synthesis, TCA cycle, fatty acid oxidation, ketone body production. There are various matrix enzymes present in the mitochondria which are responsible for various processes like heme synthesis,
urea cycle in which the CPS1 is present enzyme, gluconeogenesis, the production of glucose from non-glucose substrates, and pyrimidine synthesis. The marker enzyme for mitochondria, we have to memorize this. That is, the marker enzyme is ATP synthase. So marker enzyme क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया की? ATP synthase. Let's discuss endoplasmic reticulum. So as we know, there are two types of endoplasmic reticulum. That is rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. The rough endoplasmic reticulum is associated with ribosomes, responsible for protein synthesis, whereas smooth endoplasmic reticulum is not associated with ribosome, which is involved in the synthesis of lipid and also in the metabolism of drugs or the detoxification of drugs. The marker enzyme for endoplasmic reticulum, it is the glucose 6-phosphate. So marker enzyme for mitochondria is ATP synthase and marker enzyme for endoplasmic reticulum is glucose 6-phosphatase. Let's discuss Golgi bodies. So as we know from the basics of 11th and 12th, the Golgi bodies, these are the the Golgi bodies which are responsible for the packaging of protein, which is responsible for packaging functions of the cell. So the newly synthesized protein which are synthesized in the RER, these are to be transported to the Golgi bodies. For what? For the packaging, for the addition of carbohydrates, for the lipids or sulfate moieties to the proteins. बेसिकली यहाँ पर हमारे पास दो प्रोसेस होती हैं, दैट इज ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन. अगर प्रोटीन्स पर हम कार्बोहाइड्रेट लगाते हैं उसे बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइलेशन, और लिपिड लगाते हैं तो ग्लाइकोसाइडेशन. सो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन ग्लाइकोसाइडेशन, एंड देन वी ट्रांसपोर्ट इट अक्रॉस द सेल. Golgi bodies, these also are the networks of flattened membranous and vesicles. These involved in the, as we also discussed, these are involved in the protein packaging, sorting and secretion. Let's discuss lysosome. As we know, the lysosome, these are called as the suicidal bag of the cell. So these contain various digestive enzymes, or these are the hydrolytic enzymes जो किस पर एक्टिव होती हैं? एसिडिक पीएच पर, दैट इज pH less than 7. So the lysosomal enzymes are responsible for maintaining the cellular component in the dynamic state by their action of degradation and recycling. The marker enzyme for lysosome is cathepsins. So जो यहाँ पर हमारे पास डिग्रेडेशन होता है प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, लिपिड्स का एंड न्यूट्रिएंट का, यह अकर होता है लाइसोसोम्स में. मार्कर एंजाइम क्या होती है इसकी? दैट इज कैथेप्सिन. सो मार्कर एंजाइम इज कैथेप्सिन. सो अगर हम डिस्कस करें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मार्कर एंजाइम. वी हैव टू मेमोराइज दिस बाय हार्ट. सो फॉर माइटोकॉन्ड्रिया द मार्कर एंजाइम इज एटीपी सिंथेस. फॉर लाइसोसोम इट इज कैथेप्सिन. फॉर गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडीज इट इज galactosyl transferase. Galactosyl transferase. For microsomes it is glucose 6-phosphatase. For cytoplasm it is lactate dehydrogenase or LDH. For peroxisome it is catalase, and for plasma membrane it is 5-nucleotidase or 5-ND, or we say. So for mitochondria ATP synthase. For lysosomes cathepsins. For Golgi complex galactosyl transferase. For microsomes glucose 6-phosphatase. For cytoplasm LDH or lactate dehydrogenase. For peroxisomes it is catalase, and for plasma membrane it is 5-nucleotidase. So let's start with our topic, the most famous, the fluid mosaic model. So as we study this from our basics of the 11th and 12th, that is what is fluid mosaic model. So it is the model given by the Singer and Nicholson in the 1972, which explains the bilayer nature of plasma membrane, in which it is consist of two layers of lipids. So the fluid mosaic model, it is a lipid bilayer model. सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर मॉडल होगा, जो प्रपोज किया था बाय द सिंगर एंड निकोलसन इन द 1972.
सो सिंगर निकोलसन ने बोला था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड बाइलेयर की कंसिस्ट होती है, जिसमें एक ऊपर लेयर होती है लिपिड की, एक नीचे लेयर होती है। जो लिपिड का स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन हेड कहलाता है, नीचे वाला पोर्शन टेल कहलाता है। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। सो हमने क्या डिस्कस किया, हमने बोला कि ये हमारे पास लिपिड का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। जो ऊपर हेड होता है इट इज हाइड्रोफिलिक, इट इज द हेड इज द हाइड्रोफिलिक means water loving, and the tail is hydrophobic means it is water repellent. As we see that is this structure is hydrophobic, this also is hydrophobic, so means the basic nature of the plasma membrane is hydrophobic. And so overall the plasma membrane structure, it consists of three structures, that is lipids, we have discussed, the proteins. So there are two types of protein. The proteins which are present on the periphery called as peripheral proteins, and the protein which are present in the plasma membrane, these are known as integral proteins. There are various structures like glycoproteins or glycolipids which are present on the outer surface of plasma membrane. Remember, glycoproteins and glycolipids, these are not present in the inner surface of the plasma membrane, only present on the outer surface. There are some channels or the carrier proteins which are also present in the structure of plasma membrane, which are responsible for the facilitated and active transport. सो हाइड्रोफिलिक हमारे पास हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल होगी. इट कंप्राइजेस ऑफ लिपिड्स, दैट इज फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द प्रोटीन्स, दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स, द कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, these are present on the outer surface. So let's discuss about the some proteins, that is we have discussed that is there are two types of protein, peripheral protein or integral protein. So peripheral proteins, these are also known as the extrinsic protein, present on the external surface of the membrane. So these are loosely held and can be easily separated. Example, cytochrome C of the mitochondria, which is a mobile carrier. The integral or the intrinsic protein, these are tightly bound and can separated by only detergents or organic solvents. Example, cytochrome P450 or hormone receptors. So last but not the least, we would discuss about the various transport across cell membrane. So जब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में, so there are basically three types of transport, that is passive transport, active transport and vesicular transport. As the name suggests, the passive transport means it is along the concentration gradient. Passive means no energy. It is along the concentration gradient, high से low concentration पर होगा. So passive transport, simple, facilitated and osmosis. These are two types of diffusion, that is simple diffusion and facilitated diffusion. Osmosis for the solvent molecules. Active transport, as the name suggests, that is there is a requirement of energy expenditure. So यहाँ पर हमारे पास against the concentration gradient होता है, that is from low to high. So there is requirement of energy. So on the basis of energy requirement, that is from where and from how the energy is get. So there are two types of active transport, that is primary active transport and secondary active transport. The primary active transport, there are three examples, the sodium potassium ATPase, calcium ATPase or potassium hydrogen ATPase. The secondary, the uniport, symport or antiport. Uniport means there is movement of only one molecule. Symport, there is movement of two molecules in same direction, and antiport, there is movement of two molecules but in opposite direction. Last, vesicular transport, these are associated with endocytosis or exocytosis.
These are for large molecules which are cannot be transported by the passive and active transport. So let's discuss the passive transport, that is simple diffusion. As we already discussed, the transport of substances along the concentration gradient, that is from high concentration to low concentration. So it doesn't require the energy or ATP. So जैसे हम यहाँ बोल रहे थे, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ऊपर हमारे पास हायर कंसेंट्रेशन थी, इधर लोअर कंसेंट्रेशन थी. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. सो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हाई कंसेंट्रेशन से लो में मूव करेंगे डायरेक्टली विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी. व्हाट अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? सो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा अंतर आता है. द नेम फैसिलिटेटेड शोज इट इज समहाउ फैसिलिटेटेड मीन्स हेल्प्ड बाय. सो इट इज हेल्प्ड बाय द carrier proteins or carrier channels. Means it is a type of diffusion, means the transport of substance occurs along the concentration gradient, that is from high concentration to low concentration. It doesn't require ATP, but the most distinguishing feature is that it requires carrier protein for the transport. It is important in the case of facilitated diffusion. सो होगा हमारे पास हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पर ही अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी और एटीपी, बट देयर इज अ कैरियर प्रोटीन फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. लेट्स डिस्कस द ऑस्मोसिस. सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड द सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वी ऑलरेडी डिस्कस. द ऑस्मोसिस इज फॉर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. सो वही होगा हमारे पास अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई टू लो. सो ऑस्मोसिस में कैसे बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट टुवर्ड्स अ हायर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन. लेट्स डिस्कस दिस. सो अगर हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, सो इट इज ऑल्सो अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज हाई टू लो अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. अब जो हमारे पास ग्रेडियंट होता है इट इज मेंटेन्ड बाय टू, दैट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. सो मूवमेंट अगर हम बात करते हैं दैट इज सॉल्वेंट का हो रहा है तो हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट पर होगा. और एज वी नो दैट जहां पर सॉल्वेंट ज़्यादा वहां सॉल्यूट कम, तो या फिर हम बोल सकते हैं लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट पर होगा. तो हम दो तरह से बोल सकते हैं, हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की डायरेक्शन मूवमेंट होगा या फिर लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की डायरेक्शन में मोशन होगा. There are some clinical applications of osmosis, that is edema, the saline infection, the mannitol which is also used in the treatment of the cerebral edema, and the osmotic fragility जो डिक्रीज हो जाती है in the hereditary spherocytosis. So this is structure. हमारे पास सेमी परमिबल मेम्ब्रेन थी और यहाँ पर हमारे पास कम सॉल्यूट थे, यहाँ पर ज़्यादा सॉल्यूट थे, तो इधर से इधर हमारे पास मोशन हो जाएगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का. So now we discuss about the active transport. As the name suggests, what is active transport? So the name active means there is a requirement of energy. So the movement occurs against the concentration gradient, that is from low concentration to high concentration. There is a requirement of energy or the carrier proteins from low concentration to high concentration. So on the basis of energy utilization and from where the energy is utilized in the process of transport, the active transport is divided into two types, that is primary transport and secondary transport. If the energy is taken directly from ATP, it is known as primary transport, and if the energy is taken indirect, so it is known as secondary transport. So first we discuss about the primary active transport. So यहाँ पर हमारे पास तीन एग्जाम्पल्स, दैट इज सोडियम पोटेशियम ATPase, और भी जैसे हम पढ़ते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, द कैल्शियम ATPase एंड पोटेशियम हाइड्रोजन ATPase. लेट्स डिस्कस द बेसिक्स ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase. सो वी हैव टू मेमोराइज दिस, दैट इज सोडियम पोटेशियम ATPase में हमारे पास तीन सोडियम मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं, दैट इज 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स हमारे पास बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं. तो हमने क्या डिस्कस किया, दैट इज
सोडियम पोटेशियम ATPase में 3 सोडियम मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल अंदर आते हैं और यहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है 1 ATP का। सो 1 ATP की यूटिलाइजेशन से 3 सोडियम जाते हैं बाहर और 2 पोटेशियम आते हैं अंदर। Let's discuss the secondary active transport. So we have already discussed in this that is the source of energy is indirect from the products of primary active transport. So indirect use of ATP होगा. There are 3 types, that is uniport, that is symport and antiport. So uniport में क्या होगा? There is involves the movement of single molecules through the membrane, like इट इज़ द कैरियर प्रोटीन। यहाँ पर सोडियम पोटेशियम का होगा इज अ सेल। सो ग्लूकोज का हमारे पास मूवमेंट हो रहा था किसके इन्फ्लुएंस में? क्योंकि यहाँ पर सोडियम पोटेशियम ATPase से। इट इज़ यूनिपोर्ट। सिम्पोर्ट, इट इज़ सीन इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल। सो यहाँ पर साइमल्टेनियस ट्रांसपोर्ट होगा 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का इन सेम डायरेक्शन। लाइक जैसे हमने पढ़ा था प्राइमरी ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम पोटेशियम का, सोडियम पोटेशियम ATPase का, जिससे क्या होगा? सोडियम बाहर जाएगा। वो क्या कॉज करेगा? अंदर सोडियम की डिफिशिएंसी हो जाएगी, जो कॉज करेगा कि बाहर से सोडियम अंदर आए और सोडियम के साथ में क्या आता है? ग्लूकोज। सो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से सोडियम बाहर गया, जिससे सेल के अंदर सोडियम की कमी हुई, जिसकी वजह से अंदर हमारे पास एक नेगेटिव ग्रेडियंट बना सोडियम के लिए एंड बाहर पॉजिटिव ग्रेडियंट। सो बाहर से सोडियम अंदर आया एंड सोडियम जो अंदर आया उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करके ग्लूकोज अंदर आया। इट इज़ द सिम्पोर्ट फाउंड इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल। द एंटीपोर्ट, दैट इज देयर इज अ साइमल्टेनियस ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इट इज इन द एरिथ्रोसाइट्स, दैट इज जैसे हमारे पास इधर सोडियम पोटेशियम ATPase का होगा, फिर यहाँ से हमारे पास क्लोराइड शिफ्ट होती है, क्लोराइड अंदर आएगा एंड बाइकार्बोनेट बाहर जाता है। सो here's we complete the discussion of the basics of biochemistry. Hope you understood this as well. If you have any doubt, please reach me in the comment section. The notes of this are available on my WhatsApp channel and my Telegram channel. You can join this channel from the link given in the description. Hope you understand. Thanks for watching. Thanks.